Good morning, students. This is Monica Yadav, your science teacher. Class 7, chapter number 5 Acid, Bases, and Salts, Part 2. Today we will continue with our chapter Acid, Bases, and Salts, Part 2. So, what are acids? Acids are those substances which react with a base to form a salt is called an acid. वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है बेस के साथ सॉल्ट फॉर्म करने के लिए तो उसे हम बोलते हैं एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एसिड टर्न blue litmus to red and acid have sour taste. In our last lecture, we have already talked about indicators. So, what are indicators? Indicators are the dyes that change color when they react with acid or base. Indicators dyes होती हैं जो change करती है कलर को जब acid और base के साथ react करती हैं तब। तो acid turns blue litmus red, blue litmus to red. Few examples of acids are, हम कौन कौन से एग्जाम्पल जानते हैं जो हमारे आसपास हमें एसिड के दिखते हैं? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. There are so many acids that we know around us. These are mostly organic acids which we eat. जो हम खाते हैं वो मोस्टली आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. What are organic acids? Organic acids are the naturally occurring acids. They are found in various type of plants and animals. वो naturally occurring acids होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा plants और animals में मिलते हैं. अब वो कौन कौन से हैं? Acetic acid, formic acid, citric acid, lactic acid, tartaric acid, ascorbic acid, and oxalic acids. These are organic acids. Now we will study that where they are found. So, आप चाउमीन शॉप पे जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो चाउमीन बनाने वाला है वो एक वाइट लिक्विड डालता है. That white liquid is acetic acid which is called as vinegar. विनेगर और सिरका जो हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिजर्वेटिव इन फूड्स, दैट इज़ ऑल्सो sour in taste. So vinegar is also a preservative and it is an acid. Then formic acid. Formic acid is present in ant sting. जब आपको चींटी काटती है तो आपको शार्प पेन होता है because sting of an ant has formic acid and that formic acid cause irritation in our skin. Citrus fruits such as lemons and oranges also has citric acid. Then curd and milk has lactic acid. Tartaric acid is present in tamarind. Ascorbic acid is present in amla and citrus fruits and it is also known as vitamin C. That is very necessary for our immunity building. Then oxalic acid is present in spinach. Then how will you test the presence of an acid in a substance? By performing the litmus test. What will we do? We will take a litmus paper, then we will take a litmus paper, then we will put few drops of acid on it and we will see the color of the litmus paper. If you will take red litmus paper, it will not change the color when acid is poured on it. So, it is not an base. Then, if you put some lemon juice drops on blue litmus, it will turn red. It shows that lemon juice is an acid.
Organic acids are weak acids. That's why we are able to eat them or drink them, because they are not harmful, they are very weak acids. But there are some other categories of acids also, and in that this is mineral acids. मिनरल एसिड्स हम प्रिपेयर करते हैं मिनरल्स ऑफ अर्थ से, जो अर्थ में मिलने वाले मिनरल्स हैं उनसे. सो मिनरल एसिड्स are those acids which are prepared from the minerals of the earth, and these are also known as laboratory acids because we use them for our laboratory purpose. Then what are these acids? Hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. So sulfuric acid is used in making storage of batteries. स्टोरेज बैटरीज फॉर कार, बसेस, ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स. आपने देखा होगा कई बारी आपके इन्वर्टर में से जो लिक्विड सब्सटेंस अगर बाहर आ जाता है तो वो आसपास की चीज़ को येलो कर देता है या उसको बर्न कर देता है, या बैटरीज में से अगर वो लिक्विड रिलीज हो जाता है तो वहाँ पे वो रखी चीज़ को बर्न कर देता है. वाई? बिकॉज दैट कंटेन एसिड्स. And what are these acids? These are concentrated mineral acids. Nitric acid is used by goldsmith for cleaning gold and silver ornaments. Then strong acids and weak acid. Hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acids are strong acids. एंड वीक कौन कौन से हैं जिन्हें हम खा सकते हैं और पी सकते हैं? कौन कौन से? एसिटिक एसिड, formic acid, citric acid, tartaric acid and carbonic acids. These are weak acids. You have to learn these examples. HCl, sulfuric acid, nitric acid are strong acids. Acetic acid, formic acid and citric acid, tartaric acid, carbonic acid are weak acids. Then, what is an acid rain? The rain which contains a higher level of acid than normal is called acid rain. जब बारिश होती है उसमें एसिड का लेवल ज़्यादा होता है नॉर्मल से, तो वो होती है एसिड रेन. अब ये कैसे बनती है? हम इतना सारा पोल्यूशन करते हैं, हमारे व्हीकल्स चलते हैं, तो दे ऐड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जब SO2, NO2, CO2 चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो जो पानी है उसके साथ मिक्स होकर क्या फॉर्म करते हैं? एसिड रेन. और जब वो एसिड रेन ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं तो वो बर्न कर देती हैं वहाँ की चीज़ों को. तो अब वो क्या होता है, क्या उससे डैमेज होता है? एसिड रेन मेक्स द वाटर ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स and river too acidic, due to which fish and other animals get killed. तो वो मर जाते हैं. Then acid rain eats up the leaves of the tree gradually. फिर वो धीरे धीरे उसको खा जाते हैं. किसको? पत्तों को. कैसे? वो बर्न कर देते हैं. Then acid rain damages the metal structures like steel bridges etc. And they also damage building and monuments made of stone. So in today's class, that what we have done acid. How can you test the acid? Then what are the two type of acids? Then what is acid rain? You have to learn about them in detail today, and then you will also learn what are acids, how do they react, what are their properties, and what is acid rain. You have to explain that. Thank you so much for listening to me.